Namaskar, everyone. Today, we are assembled here to discuss a wonderful topic, which is cooperation and convergence possible in a ruthless competitive world? इस बेरहम प्रतिस्पर्धी दुनिया में क्या सहयोग और अभिसरण संभव है? See, the cooperation comes with the word operation. So the operation means to get something done through any medium or media. Suppose you are operating a tool machine. If the type of operation is done with a collective efforts, then it is called cooperation. So इस तरह के जब सब लोग मिलकर के कोई एक काम करते हैं तो इसको हम कोऑपरेशन कहते हैं। एंड एक दूसरा वर्ड आता है कन्वर्जेंस। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी में भी इसका उपयोग है। जैसे आजकल एक टेक्नोलॉजी हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द जनरल एआई। This is nothing but convergence of many technological developments till date. So this way we are thinking about even society, how convergence of society is possible in this competitive, rather ruthlessly competitive world. So this was the subject for discussion today, and with due respect, may I request my Dada Haranand Dada, we will also speak, but we wish to start from you. Thank you, Dada, for this opportunity. Now, the topic is quite contextual, I should say. The world has been witnessing two major wars. One is pretty long, going on since a couple of years. The other has also started, I think, from 7th October 2023. That is Israel-Hamas conflict, and we all know about Russian-Ukraine conflict. Now, in this scenario of conflict, where do we find cooperation and how do we build convergence or synergy? One thing has to be appreciated very clearly, that the geopolitical compulsions of different countries and different areas are always there and will continue to be there. Tomorrow, maybe as Proud thinks about world government, but still in that government also, the existence of countries will not vanish. Each country will have a representative and the whole system has been laid down. So every country will exist. And it is not that we are will land up in a utopian world where everything will be fine. Conflict will always be there, as it has been clarified in the philosophy, that Sadvipras being at the center of conflict management. Actually, administration is basically conflict management. Conflict management has a few other dimensions, like it is mitigation of conflict, it is elimination of conflict, it is prevention of conflict. There are many dimensions. Sometimes you can prevent the conflict, sometimes you may not. Like the Indo-Chinese issue, it is very difficult to find a solution. Both governments are trying their best, border meetings have been going on. So the geopolitical compulsions will always be there because every country will have different interests, different resources, different demands and different supply chains, because requirements are different. The whole physical geography is different in all countries. So we must always remember chapter 5, the 8th aphorism, Vachitriam prakrit dharma samanam na bhavishyati. We cannot aim at equality, that A should be equal to B, B should be equal to C. It is not that. So let us first proceed with this assumption that divergence will always be there in this world. Now, what is the way out? How do we? It's a fragmented world. Right now, it's a fragmented world. There are serious conflicts in South China because of that, 11 dash approach of China, 9-11 dash in South China Sea. All the countries in that area, Philippines and Taiwan, they are feeling threatened, including Japan. So in the Middle East, we see the scenario, what is happening in Israel-Hamas conflict. Certain countries are supporting it, certain countries are supporting the other one.
Ukraine is being supported by NATO. So it's a fragmented world. Now, cooperation is definitely there. The countries of NATO are cooperating with each other to support Ukraine. Otherwise, it is difficult for a small country like Ukraine to fight a war against a big giant like Russia, which it has been fighting. It has been losing partially, but it has been hitting back because of the support of massive weaponry from NATO countries, especially USA. Okay. Now, cooperation is there, but with limited interest groups. There are a number of groups, BRICS is there, smaller groups are there. We have, I2, U2, Israel, India, and United Arab Emirates, and all smaller groups are there. We have this this African Union, which joined as a representative just now in G20. We all know that. That's a good thing that about 50 countries of Africa have joined the World Forum, International Forum, important forum. So smaller interests are converging. Convergence is there of a smaller interest and conflicting interests. Like, you see what we call, strategic ambivalence. Now, strategic ambivalence is USA is supporting Taiwan, but USA and China are great trading partners. We all know that. And China has put in a lot of funds in USA. And if the entire world knows that as far as the supply chain of many items which deal with artificial intelligence computers, they come from China, chips and all. Now India is trying to, slightly do something in that direction. So this is strategic ambivalence. You are, as far as Taiwan is concerned, USA is opposing China, but then also friendly with China because of the compulsions of trade. That is there. So it is a dichotomous, divided world. It is a party united, divided, fragmented world. It's a strange scenario that I can't live with you. In psychology, they say, I can't live with you, I can't live without you. So this relationship is of a unique character. Now, convergence. Now, unless there is one goal, there cannot be complete convergence. And there could be a scenario in Proutist evolution that ultimately one goal will take over. Then if the whole cosmos, cosmos is a later stage, which Baba talks about, Mahavishwa and all that. But as far as this planet is concerned, if there is one goal, we can agree to one goal, like United Nations as an organization has agreed on many goals, which are called SDGs, and every country has agreed, yes, we have to reduce carbon emission, we have to control, climate change, we have to control poverty, hunger, malnutrition, gender injustice, so many things, I think all of us should go through those sustainable development goals of United Nations. The whole world has converged as far as ideas about the growth of the planet is concerned, and SDGs of United Nations are a good mirror, and every SDG, Sustainable Development Goal, has sub-goals, smaller goals. So they have tried to cover, but political conflict is inevitable because of different systems of governance. It will continue. As a famous journalist commented, that dictatorships in the present era are more united than democracies. Now, it's a very serious comment because we know that North Korea, the famous dictatorial country, is being supported by what? China and Russia. Now, China, we all know, is again a dictatorial country, though they practice what? Socialist democracy and all that. Russia, we all know, elections were conducted recently, but what happened to the opposition candidates? One person died while in prison and all that. It is a known story. So these dictatorships, which are presently existing, Russia, China, North Korea, apparently they are united on many issues. So
And democracies are fighting their own battle. Dictatorships are fighting their own. China is fighting its own battle because China also knows that it has lot many enemies. And of course, Russia, Putin very well knows that the whole NATO gang is after the blood of Putin. So this situation can change only in a case of major war or major revolution. And then the point of universal convergence can be thought of, because political divergence is so serious that, our Shri P.R. Sarkar made it very clear that it's not a world for bigger animals and smaller countries. So that way, slowly, smaller countries will fade away in existence, or will, ultimately, bigger countries will take over. But that will take time. So far, nothing has happened. So far in the past history of certain decades, we have only seen that countries are getting divided. Pakistan, East and West, Bangladesh emerges, Korea, North Korea, South Korea emerges. Countries are. So the whole of Africa was divided on a map by the rulers, Britishers. So in this scenario, we must have a goal, which is the Proutist philosophy. It talks of one humanity. It talks of complete convergence, synergy of goal. Now, fundamentally, if we go deeper into aspects of neo-humanism, as it is the cult of love, but love also, as it has been clarified in the philosophy, Binbai Hoina Preeti, it has been clarified that persuasion cannot always work. In many discourses, it has been told that coercion has to be applied, use of force has to be done when persuasion fails. So ultimately, it's a combination of persuasion and coercion that will slowly move things, because some people will definitely, moralists and others, sympathizers, they will join the camp of Proutists or moralists or whatever you say. And the other camp will keep on opposing. We'll have, just now we saw a small presentation that, conflict will always be there, but through the process of conflict, something will emerge out of it. But right now, it is not visible. Yes, last thing I would say, that we should see the governance system of Scandinavian countries, Finland, Sweden, Denmark. You talk to any citizen of Norway, Finland, Denmark, they are so happy. They say everything is arranged by the government, education, houses, everything is arranged, and they are asking for taxes. Yes, government has to ask for taxes. If they give free education, free housing, everything is free, then how does the government work? So taxes have to be there. So if we look at the model governance systems right now in the world, it is unanimously agreed that Scandinavian system is the best. In the happiness index, they are always leading the world, apart from Bhutan, which is also one of the top 5 countries in happiness index. But for different reasons, it's a Buddhist country, does not have army, so many other factors are there. But country, and see the whole system of education in Scandinavian countries, where domestic economics is taught in primary schools, कि घर का खर्चा कैसे चले, ये बच्चे को बचपन से मालूम होना चाहिए कि हर चीज बोल दिया, चांद तो पापा चांद ले आए, मम्मी वो ले आई, नहीं, तुमको ये बजट है, तुमको इसके भीतर चलना पड़ेगा. तो ये बच्चे, ये चीजें, मॉरल साइंस, डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स, ये बचपन से पढ़ाना पड़ेगा. और मॉरल साइंस इंक्लूड्स अदर थिंग्स लाइक योगा एंड अदर थिंग्स. तो इसीलिए अभी जो सिनेरियो है, इसमें आई थिंक we can only look forward to countries like those countries, Denmark, Sweden and Finland. They are smaller countries. We may always argue against it कि उनकी आबादी कम है, उनका लोकेशन बहुत ठंडे जगह है, लोग कम है, तो वो हैंडल कर लेते हैं. हम तो अपनी आबादी का ही रोना रोते हैं कि हम 140 करोड़ हो गए, सर धुनते हैं कि ये हो जाएगा. कभी कोई फिगर आता है कि 2050 तक इनका शासन हो जाएगा, कोई मेजोरिटी में आ जाएगा, कोई माइनॉरिटी में, तो हम तो इसी में उलझे. खैर, हमारी जो उलझने हैं वो सुलझने वाली आसानी से हैं, मुझे जो लगता है, क्योंकि हमको रोने की बीमारी है इस देश में. हम कभी गरीबी का रोना रोते हैं, कभी आबादी का रोना रोते हैं,
हम कभी साइज का रोना रोते हैं कि हमारा इतना बड़ा देश है, हम तो मैनेज नहीं कर पा रहे। तो ये रोने बिलखने से कुछ होता नहीं है, करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। These are my few submissions for the galaxy to consider and give it a further expansion in some other dimensions of thought. Thank you, Dada. Thank you very much. Thank you, Dada. Thank you very much. It was a wonderful start, and it started from the international perspective of the wars, and it's really the fact. And लोग नर्वस हो जाते हैं कि क्या कुछ होगा, बट इसके साथ एक होप भी दिखाई देता है. एज यू राइटली गिव द एग्जांपल ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वन ऑफ माय दादा टोल्ड मी कि अरे वो तो घर से उठा के ले जाते हैं कि तुम्हारा मेडिकल का यदि डेट आ गया है, दे विल गो टू योर हाउस एंड दे विल टेक इट यू एंड अगेन दे विल डू ऑल द जनरल चेकअप्स एंड सेंड यू बैक टू होम. तो ये जो वहां पर केयर वाली जो बात है वो तो रियली, और इसे एक और जो बेनिफिट दादा जो मुझे दिखता है, once the government takes care of you, you never accumulate money. At the end of, you also know the culture over there. At the weekend or the month end, the entire most of the salary left, which they want to spend and enjoy anywhere, everywhere, and see the money when it starts money rolling in the system, and obviously their economy gets strengthened. And this is the very basic of Prout. Baba says that if money is idle, then it doesn't hold any value. So that is very much being practiced in Scandinavian countries. इतना तो जरूर है, जैसा आपने एक बात बोला कि कन्वर्जेंस की एक पॉसिबिलिटी बहुत सिंसियरली दिखती है जब हम जैसे एनवायरमेंटल इशू की जब हम बात वर्ल्ड लेवल पे करते हैं, ग्लोबल लेवल पे करते हैं. और आपने बहुत खूबसूरत एग्जांपल दिया रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इनका प्रोग्राम है, एसडीजीज जो है 30 तक जो इनका प्रोग्राम है, बट ठीक है, मेरे को पूरा विश्वास है एज एन इंडियन थिंकिंग प्रोसेस कि वो 30 भी चला जाएगा, बट ये पूरा होने वाला नहीं है, बिकॉज द लैक ऑफ सिंसियरिटी. दे हैव सो ब्यूटिफुली टेकन कि जिसको प्रउत कहता है, मैं तो उसको ऐसे देखता हूं कि द बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ नॉट ओनली पर्सन बट ऑफ नेचर, बट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. जो उसके बाद किसी को शौक है तो तुम जो करना है करो, बट यदि ये एसडीजीज की गारंटी हो जाती हैं तो मेरे को लगता है कि हर एक व्यक्ति के लिए ये बहुत स्ट्रांग आधार बन जाएगा, स्पेशली फॉर स्पिरिचुअलिस्ट्स. मतलब अ मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन उनके लिए है कि भाई हमको हाय हाय नहीं करना है कल के लिए, हमको मतलब एटलीस्ट बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स. आप तो जितने भी इसमें काफी स्पिरिचुअलिस्ट लोग हैं वो जानते हैं कि यदि हम लोग को बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की पूरी हो जाए तो हमको इतनी हाय हाय नहीं पड़ी है, हम बाबा नाम केवलम में ही मस्त रहेंगे, परम पुरुष की तरफ ही चलेंगे. और ये मेजॉरिटी जो है, बाबा भी कहते हैं कि देखो भारत में तामसिकों की संख्या बहुत ज्यादा है, जैसे आपने बोला हम लोग रोना ही रोते रहते हैं, बट एट द सेम टाइम सात्विकों की संख्या भी रिलेटिवली उतनी ही अधिक है. ये बड़ी खूबसूरत बात बाबा ने कही. और जो हम देख रहे हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में और अदर सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज में, वहां जो चीजें हम देख रहे हैं वो बाबा जो कहते हैं, तो वो जो है राजसिक गुण उनमें बहुत है. वो करके देखना चाहते हैं. दे डोंट वांट कि क्या होगा, दे वांट टू डू इट एंड सी इट एंड देन प्रोसीड. तो ये जो दोनों में, इसलिए बाबा कहते हैं कि प्राउड इज द सिंथेसिस. हियर आई एम कमिंग टू द कन्वर्जेंस. द प्राउड इज द सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न थॉट एंड वेस्टर्न थॉट, दैट इज ऑफ द सब्लाइम स्पिरिचुअलिटी एंड द मटेरियल वर्ल्ड. सो बिकॉज दोनों, किसी को हम कहते हैं बाबा बहुत प्रोमिनेंट हम लोगों का लाइन है, योर अप्रोच शुड बी सब्जेक्टिव विथ ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट. सो ये जो बात है, ये दोनों को मिला के चलना है. सदविप्रों का जो निर्माण है उसके लिए हम रूट में जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल हमको याद आ रहा है दादा विमलानंद जी का क्लास, जब वो कहते थे व्हाट सदविप्रा साइकोलॉजी कैसी होगी. एवरीबडी फाइट्स फॉर देयर राइट एवरीवेयर. पीपल आर ऑलवेज पागल टूवर्ड्स देयर राइट कि मेरा राइट ये है, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो दो. बट nobody fights for their duty, for their responsibility. And that is the dominance in Sadvipras. So this is again a fundamental difference. मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है. बाबा कहते हैं कि जो ये कहता है, बहुत लोग घमंड में कहते हैं कि मेरा किसी से मतलब नहीं है, मैं अकेले ही बहुत हूं. दिस इज फूलिशनेस. ऐसा हो नहीं सकता है.
वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर वन और द अदर रीजन। कहीं एक एग्जाम्पल देते हैं, ये तुमको बाल्टी से पानी भी यदि निकालना है, पुराने जमाने का चूंकि एग्जाम्पल है, आज का नहीं है, तो कहते हैं यदि कुएं से पानी निकालना है तो तुम कुआं थोड़े खोदोगे, या मान लो कुआं है भी तो तुमको बाल्टी की जरूरत है, रस्सी की जरूरत है, तो ये तुम अकेले तो नहीं कर सकते, यू कैन नॉट क्रिएट दैट। एंड हियर things are basically missing in our capitalism, because they think that it is because of my power, it is because of my intellect that I am earning, and then forget that if that very worker जो नहीं रहता तो शायद हम ये नहीं कमा पाते। सो इक्वली उसका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। सो देर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस in protestic setup, and in spiritual setup there is a cooperation possibility, and not only cooperation, Baba says that you should have a coordinated cooperation, not subordinated cooperation। आज पूरे विश्व में जो आप कॉपरेशन देखते भी हैं दादा, ये किसी न किसी से तरह से डोमिनेंस है। उसका एग्जांपल के लिए अभी मैं एक रिसेंट एग्जांपल दे देता हूं। किसी अमेरिकन उसको आप देखें, अभी रिसेंटली किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट में उसको बुला लिया गया, तो सम कंट्री गेट एनॉयड। तो ये जो वो जो कोऑपरेट करता है, वो बंदे के अंदर इतना घमंड है कि आई एम द सीनियर। That is not the coordinated cooperation. Coordinated cooperation has to have a very equal footing in all respect. So that is what was coming to my mind after your lecture, Dada. If somebody can speak on this, may I request my Ajay Bhalla Dada to speak, especially his mastery on biopsychology talks a lot about how to make people convergent in their thinking or coordinated cooperative in their thinking। वैसे तो बाबा ने बोला है कि साधना के द्वारा जब तक मन 360 डिग्री बड़ा नहीं होता है, तब तक जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे दादा ने भी बताया, जियो सेंटिमेंट, कंट्री का सेंटिमेंट, या किसी लैंड का सेंटिमेंट, लैंग्वेज सेंटिमेंट, सोशियो सेंटिमेंट, जिसमें रिलीजन्स, कास्ट, कम्युनिटी सब आते हैं, हम तो इतने संकीर्ण बंधन में फंसे हुए हैं दैट वी आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। But there is a possibility, and there is a science, what you call inner science. With help of that, if everyone starts practicing it in a scientific manner, as rather rightly said, and this should be started right from the basic education, from the primary schools and colleges, I think world can change. Yes, Ajay Bhala Dada, are you hearing me? If you are hearing me, can you speak on the subject? Yes, नमस्कार दादा। एक्चुअली सभी को प्रणाम। First of all, actually, the topic Haranand Dadaji has discussed and you have told is really kalished for me. I am not very much clear about all that, but I know one thing, that Baba has given one thing to all of us, that is Sangha Chadvam. And that Sangh Chadwan concept, if that is implemented throughout, universally, as well as what we call as at the basic levels, only then all those positives can be achieved. We can what we call as we can reach that pinnacle of a neo-humanistic approach that Baba has given us. And for that, certainly, spiritualists, they have to come forward, and in the form of what we call as Sadvipras, as you very rightly said, that four are there and fifth Sadvipras are to be there. And but for the time being, I am really not very optimistic, because not only different countries, but even in same organizations as well, which are spiritualist organization, we are seeing there are so many conflicts. We have, if we see that, to be very frank, I have seen so many organizations, spiritual organizations, which are thought to be spiritualist at the present. वो सभी spiritualist हैं, बट मोरालिटी उनमें शायद लैक हो रही है, या स्पिरिचुअलिस्ट दिखाने के लिए। अब मैंने 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस में मेरा जो है काफी आई हैड टू बी देयर और टू नो अबाउट दैट। जैसे कि अभी पता लगा कि एक आपने सुना होगा, मैं पर्टिकुलर नाम ले रहा हूँ उनका, आशुतोष महाराज जी हैं, उनका जो है जस्ट ही इज डेड, बट बेसिकली उनकी बॉडी को रखा हुआ है। क्या रीजन है उसका?
क्योंकि उसमें भी ग्रुप्स बने हुए हैं, यानी कि दैट इज अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन. व्हाई आई एम टॉकिंग ऑल दैट कि जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. I used to I went there for an all world Gayatri Parivar. There also two groups are there. They are not coordinating with each other, and some other organizations also we have seen. The thing is, in our, don't mind, in our organizations also we can see all that. We are spiritualists, we are all spiritualists, but even then we can see that there are certain kind of conflicts. So I am not a very positive approach from that angle, that if spiritual organizations are lacking that proper coordination, how we can expect that geopolitically different countries and all. That is my point. That is my submission. That is, although I know it's a very negative submission, but that is my point, that for the timing I am not able to see that this thing is going. But again, जैसे आपने कहा कि डंडा राज एक अगर आएगा जो कि सबको जो है गवर्न करके एक बार एक लाइन में जब लेके आएंगे, then only I think we can go to that. And for that, certainly, main real spiritual moralists have to be given power. Only then what we call as proper neo-humanism will be set up. Proper शुरू से ही उनको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए और उसी में डेवलपमेंट हो. Only then it is possible. Otherwise, we can see in same institute, in same there are 4 or 5 lectures in our institute as well. In a simple organization where 4 or 5 people are working, they are just cutthroat competition is there. Everybody is trying to just pull others' leg and try to move forward. So at very basic level, we are not finding that proper coordination. So it's very difficult, as Haranand Dadaji very rightly said. Every country has their own interests. In one interest, they are with one country. When other interest is there, they are with others. So everybody has their own personal interest. And even if someone becomes spiritualist as well, then certainly some points at a particular level when he goes, then only Sangha Sharma principle can be applied. So that is my submission, that I can understand that way. That for the time being, I am not seeing a very good future in all that. I am not able to see that proper coordination as your topic given today. Sorry, but that's my submission. I am not able to see very positive in that direction today. As on today, time may come, then Baba's philosophy and the proud, certainly, as you gave example of Scandinavia, and their government has taken all responsibility, like our all Anand Margis. I can assure, if we all Anand Margis are given what we call as, okay, खाना पीना, मेडिकल फैसिलिटी, पढ़ना लिखना फ्री है, तो हमें एक भी पैसा नहीं चाहिए भैया, हम लोग काम चला लेंगे. We can do that. We can do that. At least 80 to 90% of markets we will be able to do that, because I don't think a true spiritualist would involve any kind of power, whether it is money or any position. जब तक वो मनी और पोजीशन का जो है जस्ट पावर में इंटरेस्ट नहीं बनेगा, उससे इंटरेस्ट चला जाएगा, ओनली देन वी कैन मूव all together in a Sangha Chadvam. Only then proper coordination will be there. Only then we can reach to our goal. That's my submission. Thank you, Dada. Namaskar. Thank you, Dada. Thank you very much. There are few points you have made very interesting. एक बात हमेशा याद रखना चाहिए. Again, I am going back to what Haranand Dada told, that, and which is a universal truth को समझते हुए, that वैचित्र्यं प्राकृत धर्म समानम न भविष्यति. That is a fundamental aspect. Even Baba कहते हैं कि two atoms are not identical. If you go deeper, which science has not reached yet, then you will find that some microiota counting is different. Probably that is why Baba has said that even two atoms are not identical, and that's the nature. Similarly, आजकल एक नया थिंग आया है जो कि कैसे हम इस तरफ बात करना चाह रहे हैं कि कैसे हम विचित्रता होते हुए एक साथ चल सकते हैं. तो ये पहले तो ये सबको जानना होगा कि भाई हमारी सोच एकदम बराबर घर में ही नहीं होती है, इतने जितना अपने परिवार में, तो बाहर की क्या बात करते हैं. तो इसके लिए एक आजकल मैनेजमेंट में एक वर्ड आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी ऑल मस्ट एग्री टू दैट. लेट अस एग्री टू डिसएग्री ऑन सर्टेन पॉइंट्स.
बिकॉज देखिए हमारे और आपके विचार तो 100% मैच नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स अ नेचर, ह्यूमन नेचर। सो मान लीजिए 100 पॉइंट्स हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर नॉट एग्रीइंग फॉर द 10 पॉइंट्स, और मे बी 70 पॉइंट्स वी आर एग्रीइंग एंड 30 पॉइंट्स वी आर नॉट एग्रीइंग, so let us agree to disagree on those 30 points, but let us move forward with the 70 points, and that too with happily. That is very important. एक ऐसी साइकोलॉजी है जिसको लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इवन स्पिरिचुअलिस्ट, जैसा आपने बोला, उसमें अभी आऊंगा दादा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोला है। तो उसमें देखिए क्या है, लोग कहते हैं कि चलो भाई, हमारे हेल्दी कंपटीशन का मतलब होता है आप भी खड़ा हो गए, हम भी खड़ा हो गए। अब जब आप जीत गए, मान लीजिए कि आप, जैसे यूएस का चुनाव हुआ था, देयर वाज 46 समथिंग, वेरी वेरी क्लोज, 0.2% differences were there, we all know, and a lot of hangama was there, and that proves that democracy is not the right thing. That is also very clear. So what I want to say is कि ये जो what you call, यदि दोनों में से कोई एक जीत जाता है, तो नियम ये कहता है कि जो हार गया उसको पूरे दिल से उसके हाथ में काम बटाना चाहिए कि भाई चलो साथ में मिलकर काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ कई जगह होता है कि छोटा सा एग्जाम्पल हम अपनों में से देते हैं आके, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर मार्गिस। कहीं यदि मान लीजिए भुक्ति प्रधान जैसे इलेक्शन के लिए 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, एक जीत गया, तो ब्रॉड माइंडेडनेस का हम एक एग्जाम्पल, जो आप स्पिरिचुअलिस्ट बोल रहे थे, उसका मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वाई टू गो ऑन दैट लेवल। तो बहुत कम, वेरी रेयर ऐसे लोग हैं जो नाराज नहीं हो जाते हैं, हु कुड नॉट विन। यहां तक कि वो पता नहीं क्या, मतलब वो बल्कि दुश्मन बन जाता है, ऐसे भी देखे गए हैं। बट कई ऐसे जगह हैं, आई गिव एन एग्जाम्पल, आई विल नॉट नेम एट प्रेजेंट, लोगों ने उसको साइकोलॉजिकली ऐसे डील किया है दादा कि दैट पर्सन हु लॉस्ट हैज बिकम द की मेंबर इन द प्रेजेंट organization, and they are working together and they are flourishing. So this is also an example. I'm hinting you can understand, but that needs a very psychological treatment. That is what I told you, कि let us agree to disagree, that we are 30 points we are don't agree, we'll further उस पर बात करेंगे, अभी तो आगे चलते हैं। ये जो साइकोलॉजी है, ये जो एक मैनेजमेंट का, ब्रॉड माइंडेड मैनेजमेंट का जो एक लैंग्वेज है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही, और अगेन चूंकि आजकल हम इंटरव्यू लेते रहते हैं लोगों का, डू यू थिंक द फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर लीडरशिप इज द स्पिरिचुअल रोल? Spirituality has a role in future leadership. He very critically told, I will send you that very clip, that spirituality alone will not work. Because practically you also have seen, I am also seeing, and all have seen, that so-called spiritualist, again I am talking so-called and explain why I am talking so-called. So he told that you have seen the so toxic behavior, his word I am quoting. So the toxic behavior of a spiritualist you also might have faced, है ना, that you never expected. बाबा का भी रिसेंटली मैं स्वाध्याय ढूंढ रहा था, मिला नहीं। बाबा कहते हैं कि द वेरी फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ब्रह्म ज्ञानी इज, देखिए क्या है कि वो घृणा कर ही नहीं सकता है, वो किसी को हेट कर ही नहीं सकता है। तो ये तो निश्चित रूप से है कि जिसको आप स्पिरिचुअलिस्ट कह रहे हैं वो साधना जरूर करता है, बट ब्रह्मज्ञानी नहीं हुआ है। दैट इज वेरी क्लियर। इसका कारण दादा मैं बताने जा रहा हूं, विच दैट वेरी जेंटलमैन टोल्ड, हुम आई इंटरव्यूड एंड आई एग्री टू। बाबा सदविप्र को यदि केवल साधना ही कराना होता तो केवल एक ही पॉइंट रहता 16 पॉइंट्स में, वो है साधना। ये 16 पॉइंट्स नहीं रहते। लेट अस अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी एंड साइंस बिहाइंड what Baba was trying to make us as a spiritualist, or what he called Sarvipras, having all 16 qualities. In nutshell, many people call physically fit, mentally strong and spiritually elevated. तो उनका जो वर्शन था कि सपोज देयर इज अ डायमंड, डायमंड को सब लोग पसंद करते हैं, एज यू राइटली सो, तो स्पिरिचुअलिस्ट को, एक सदविप्र को सभी प्यार करेंगे। बाबा कहते हैं कि वो समाज में जहां जाएगा उसको लोग प्यार करेंगे, क्योंकि वो इतना यूनिवर्सल हुआ कि लोग ऐसे व्यक्तित्व को उम्मीद ही नहीं करते हैं कि अरे ये तो आदमी में कुछ है ही नहीं, ये तो सबकी बात करता है। तो ये जो क्वालिटी है, दैट इज द पिनाकल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जस्ट
closing your eyes, doing sadhana. दादा आप तो बायोसाइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं. Why there are so many people, they are so good sadhakas, but when they get angry or when you don't agree to their statement, see how they behave. माय गॉड, वो पूरा आपका इंप्रेशन जो है ना वो मिट्टी में मिल जाता है. तो इसका कारण इतना ही है कि द पीपल हैव नो कंट्रोल ऑन देयर ब्रीथ्स बिकॉज दे डोंट डू asanas which is prescribed. What I want to tell in nutshell, again biopsychology, that unless, and every 16 points is biopsychology. If you go by, it is an entire psychology. So unless we strictly follow all 16 points for many, I must say, years, and get established in that, Baba word is there, get established in that, you cannot expect the personality which you are looking for. And you are trying to gauge that personality 16 points by just 1 point. Many spiritualists are not behaving as we are expecting. So I think I'm making quite clear here, and that is our understanding. And it's a wholesome personality. It's not just doing sadhana. Sadhana is one small part of becoming a spiritual personality, और जिसको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं और जिसको सद्विप्र कहते हैं in nutshell. So this is my submission, Dada, on your points. Yes, anybody else would like to speak on the subject? Subject यही था कि आज के कट थ्रोट कंपटीशन की दुनिया में, मतलब कोई किसी को देखना नहीं चाहता है, इस तरह की कंपटीशन की दुनिया में हम कैसे कोऑपरेशन की बात कर सकते हैं? इस सब्जेक्ट पे और कोई भाई बहन बोलना चाहते हैं? May I request some sisters also to come forward and speak on the subject? So this is very interesting, and someone should speak on this. Very important. We will not talk any political things, but yes. So because you have not coming points, unless you raise hands, let me explain some points from Baba's sentences. Exactly. बाबा कहते हैं कि मनुष्य जब क्या बोलते हैं, शूद्र युग से जब क्षत्रिय युग में आया या राधर क्षत्रिय और विप्र युग के जंक्शन में आया, तो इसको बाबा इस तरह से कहते हैं कि जब मानव ने विकास के दूसरे चरण में प्रवेश किया और उसकी बुद्धि जब विकसित हुई, तो उसके समझ में आया कि उसके पास जो भी मानसिक शक्ति है उसके पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति भी है. आध्यात्मिक शक्ति अकेले परम पुरुष में ही आती है, से ही आती है. ये बहुत क्लैरिटी है, किसी और से नहीं आती है. कोई माध्यम हो सकता है, बट वो जो शक्ति आती है वो आप में वो परम पुरुष से आती है. इसको और मैं डीप में एक्सप्लेन करूं तो दीज आर ऑल द गेम ऑफ माइक्रोवाइटा, पॉजिटिव माइक्रोवाइटा, विच गिव्स यू स्ट्रेंथ, विच आई जस्ट मेंशन्ड दैट spirituality has a strength which no other strength can be compared. तो जो ये जो माइक्रोवाइटा के कण होते हैं परमात्मा के ही कण हैं. इसलिए कहा जाता है कि जो आध्यात्मिक शक्ति अकेले परम पुरुष से ही आती है, और प्रकृति की शक्ति जो है वो आध्यात्मिक शक्ति पर हावी नहीं हो सकती. प्रकृति का कार्य जो है वो गॉड है, सहयोग का है, सबऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन का है. सो लेट अस अंडरस्टैंड हियर सबऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन. तो जो समन्वित सहयोग का भी नहीं है, वो कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन भी नहीं है. जो जब आप देखिए यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बाबा बोलते हैं दादा, जब दो समान रूप से शक्तिशाली संस्थाएं, आई विल रिपीट, जब दो समान रूप से शक्तिशाली संस्थाएं एक साथ काम करते हैं तो हम इसे समन्वित सहयोग कहते हैं, कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन कहते हैं. लेकिन जब एक इकाई प्राथमिक होती है, मतलब सुपीरियर होती है, डोमिनेंस होती है, और दूसरी गॉड होती है, तो जो प्राथमिक इकाई होती है उसके संबंध में जो द्वितीयक इकाई का कार्य अधीनस्थ सहयोग का होता है, मतलब सबऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन का होता है. तो मनुष्यों को समझ में आया कि शिव जो है परम पुरुष ही सब कुछ है, और प्रकृति जो शक्ति, इसको हमारा जो पहला आनंद सूत्रम का जो श्लोक है, शक्ति स शिवस्य शक्ति, तो इसीलिए वहां पर डोमिनेंस है. हालांकि वो दोनों एक साथ ही रहते हैं, एक साथ ही काम करते हैं, बट प्रकृति जो है कहा जाता है कि शिव की वो आज्ञाकारी है, उनके इशारे पे काम करती. तो हियर इज अ सबऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन, दिस इज नॉट कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन. बोलिए प्रभात जी. थैंक यू सो मच. Namaskar everyone. Yeah, it's a pleasure to have this
meeting. Thank And, you. I heard 4 5 of our speakers, eminent speakers, and our senior dadas. I would like to compose my understanding about the cooperative and convergence in a very short way. I would like to, what I understood is that Baba has given us a very Herculean task to establish Sadvipra Samaja, or rather we can call it a protestic government. So I will focus on a physical as well as spiritual part both at the same time. So the task is Herculean, and what should be our approach? First, I would like to give one example. That suppose I want to go to Anand Nagar from any place on the India continent. What we do, we chart a plan. What is our destination, and what is our origin? So likewise, we have to draw a chart. What is our destination? That is to establish a Sadvipra government, all-round welfare government, fulfilling all the protestic concept given by our revered Baba. And what is our origin? Our origin is the current scenario of the society. As Ajay Dadaji told about this thing, many spiritual organizations, Haranand Dada told about the international scenario. So keeping all this in mind, right from the village level to international political socio equations, we have to see that what is our current configuration, where we are, and what we have to achieve. Likewise, we have to work for the smaller models. What I always speak in the meeting, we have to develop these smaller models, as Baba also told, emphasis on the master units and other things. So we as a spiritual soldier, our responsibility is big. We have to create smaller models based on the physical. Suppose some master units are having spiritual basis, spiritual orientations, like they are very prone for the spiritual meditation. Short of equipments will be there. Some of the models will have cooperative, in a sense, agriculture development. Some will have some other sort of social these things, qualities. Likewise, we have to create small model for what? To give a bigger picture of the protestant government to the world. We have to show that these are our model, and based on these model we will implement on universal or in an international level. We can establish this government. So slowly what will happen, the public or the citizen of that particular region will favor our philosophy. They will support the protestic approach, and ultimately we will be able to establish the protestic government. First we have to start in a smaller level, then we will have to go to state wise or country wise or international wise. What I feel is that I am very clear to all of you. I will compose my thoughts in these words only. Thank you very much. Thank you very much, Dadaji. Thank you so much. Yes. Actually, I haven't prepared much on it, but Oh. whatever I understood by the subject, I just want to share along with others. So, there are two words, convergence and cooperation. Cooperation without any moral base is short lived. That is not at all possible for a long live. And generally, the cooperatives which are formed are failed due to the lack of morality among the people who are coming all together for one cause. Now, when we talk about the conversion sometimes are, or you can say most of the times are driven through sentiments. Some cause comes up urgently or there in front of you, and one get attached to that cause. So conversion demand is to leave behind own interest, own ego,
and come for a cause. So coming for conversion is not as difficult. Conversion is there generally. Um, it is successful also because I say ki it comes through sentiments. Sentiment arose and the people come together. Very good point. But problem is that while capitalistic government, which basically works for their own self-interest, it cannot fulfill the demands. Whatever the condition is, how important the cause is, they show that they are coming together, but they don't. Like in the Biden government, who was earlier talking about ceasefire should be there in Hamas, and they went to UN also, which was later on not successful because Russia and China they voted out. Later on, it is found within fortnight that the Biden government was indulged in selling weapon to Israel. So this is what hypocrisy is. Still, we find that there are conversion has started coming up. The people have started uniting, not the government, because governments are the capitalistic government, but the people who are staying in different parts of the world, they are united, and those people are what who are moralist intellectuals. Moralist intellectuals may they're writers, literary writers, then the scientists, the doctors, these people who are looking oppression in the society, who find the people are helpless, who have some, you can say, empathetic inclination, or maybe that the new humanistic approach which they cultivated themselves, they were not taught but they cultivated themselves due to the negative environment. So in right now I was just reading that in UK Edinburgh there is going to be an international literary festival in May. What is found there that the sponsor who is hosting, who is giving the money to run this program, the festival, he is found indulged in a fossil fuel business, and a kind of a profit which he is gaining out of that, that is in a question. Now on the other side, the authors who are attending that international literary festival, it is a matter of pride for them. They can say that my paper was presented in that kind of a festival. But right now these authors, maximum of these authors, threaten to boycott this festival. They say ki if this kind of a sponsor is coming, going to sponsor the program, whose reputation is under question mark, we are not going to attend it. So that kind of a things are emerging, and we are very positive ki now once the moralist intellectuals will grow up, they won't depend on the government, they won't look for the government to take any action, and they will unite and come for a cause, leaving all their self interest. This is all I want to submit, Dada. Thank you so much. Very good, Didi. Thank you. Thank you. You raised something new, very important. You rightly said that there are moralists which are boycotting. I have also heard that, especially in European countries, यदि किसी इंडस्ट्री में यदि ज़्यादा फैटिलिटी हो गया, then people don't buy their products. This looks like it's a morality, but it is a morality. It is a simple morality. The word which we are looking for the change, simple morality exists, but a spiritual morality concept is given by Prabhat Ranjan Sarkar, which is spiritual morality is entire 10 commandments of Yama and Niyama. So that is very important. And as you told that there has to be cooperation, and internationally तो people are very much aware. For example, ये इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट अभी आप देख रही होंगी, सच एज अभी जो पेरिस क्लाइमेट का जो एक एकॉर्ड है ना, हाईलाइट हाउ नेशंस कम टुगेदर टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, emphasizing the importance of cooperation on a global scale. But see how many capable countries tries to put their point, you know, that no, I can do so much. I can. One of the very strong country withdrew that no, I will not be the part of it. So, I mean,
it is something like dominance. This is not the cooperation. Means there are cooperation today in international level. Many cooperations are there, even industries, though they are competing with each other, but still they are cooperating because of their survival issue. But it doesn't mean that there is a cooperation, but it's a kind of subordinated cooperation. It looks like coordinated cooperation. उसको बोलते हैं ना छद्म शूडो cooperation दिखता है कि no they are very good for each other. For example, America and India are very good friends. अभी एक किसी उसके आदमी को आप खींच के देखिए, then how your friendship goes for a toss. So the word is together, word is cooperating, there is no doubt, but it is cooperating for their selfish motives. So there is a fundamental difference with as Dada told, कि समझ में तो सबको आता है. People are intelligent. Why Baba told that neo-humanism is a liberation of intellect? Why? So intellect is very much there. It is much there, very well. But it's not liberated. And intellect can be liberated, I feel, only through inner engineering, through sadhana, in true sense of the term. Again, not sadhana is only important. Important is following the cult of spirituality, and the cult of spirituality is the 16 points together. And once we establish in that, at least leaders, देखिए लीडर्स बहुत नहीं चाहिए, तो और जब लीडर्स वैसा करेंगे तो लोग भी उसको फॉलो करेंगे, बिकॉज इज अ टिपिकल कोरिलेशन. सो कुछ लोगों को तो अच्छा बन के सामने आना ही पड़ेगा, तभी जो सूडो लीडरशिप है वो एक्चुअल लीडरशिप में कन्वर्ट हो सकती है और वैसा हमको दिखेगी. एनीबडी एल्स वुड लाइक टू स्पीक ऑन द सब्जेक्ट ऑफ cooperation and convergence in such competitive world? Is it possible? If possible, then how? Kindly, anybody else, please. Unless people work in a close cooperation, this is Baba's words, unless people work in a close cooperation, nothing great can be achieved. That is very clear. For example, great, I mean, I will quote the two things: the International Treaty for your global warming or environmental treaty. Second, which is very important for the international level, and that is what Dada told, that United Nations Organization's proposal of SDG 30, that is Sustainable Development Growth. There are almost 16-17 points. इस पे यदि लोग, जब बाबा कहते हैं कि unless there is a close cooperation, means sincere cooperation, coordinated cooperation, nothing great can be achieved. In order to promote human welfare, to fulfill the material needs, Partharthi Krishna had to raise the slogan Dharmaraj, and he united the India, at least that time. Today is the time to unite the world. So this was a very big task, beset with difficulties and obstacles. Of course, society in those days, the entire ancient India was fragmented into large number of small kingdoms. As Dada rightly said, that Baba has also said that future is not of the big animals and small countries. But it is not a negative statement. It's a very positive statement that many countries may come together and form a bigger country also. That is also the possibility. And that is very important point. एक और बात जो हम लोग बोलते हैं कि भय बिन होई न प्रीति. यहाँ जो भय है, ये भय डराने वाला भय नहीं है. ये भय होता है, ये सात्विक भय है. और सात्विक भय दिखाना, जिसको हम बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप कहते हैं, आई टेक इट लाइक दैट, वो उस तरह की भय की बात हो रही है. तो उस तरह की भय के लिए ही जो हमारा जो स्टेटमेंट है बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप, वो उस तरह की डिक्टेटरशिप की बात कहता है जैसे माँ बाप का डिक्टेटरशिप अपने बच्चों पे चलता है. उसके केवल कल्याण की ही भावना, उसको भले कष्ट होता है थोड़ी देर के लिए, बट उसकी कल्याण की भावना ही उनके मन में रहती है. तो ये जो कठिनाइयों और बाधाओं से भरा यह जो विलक्षण कार्य था सदा कृष्ण के जमाने में, ये उन दोनों के लिए तो बड़े छोटे छोटे राज्य थे. कृष्ण को आशा थी कि सभी छोटे छोटे राज्य एकजुट होंगे और एक सुगठित समाज, एक स्थिर महान भारत का निर्माण करेंगे.
एक मजबूत और एकजुट भारत के संघीय इकाइयों के बीच समन्वित सहयोग, जिसको आप कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन कहते हैं, से सामाजिक आर्थिक जीवन में स्थिरता आएगी। तो ये जो हमारा एसडीजीज हैं, जब तक कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन की बात नहीं होगी, जब तक समन्वित सहयोग की बात नहीं होती है, जब तक सामाजिक आर्थिक जीवन में स्थिरता तभी आ सकती है और ये नैतिक स्तर से सुधार होगा। यहाँ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा सेज कि ये जो सुधार है, एक नैतिक स्तर में सुधार करने से ये सुधार होने वाला है, जिससे लोग आध्यात्मिकता के रूप में प्रगति कर सकेंगे। तो उनका मिशन सामूहिकता तक फैला हुआ था, ऐसे कृष्ण की आकांक्षा थी। तो इस तरह के ही कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन की तो बाबा आगे कहते हैं कि thus as human attention and activity is directed more and more towards subtler pursuits, देखिए आप बहुत ही खूबसूरत बात बोलते हैं, सटलर परस्यूट्स की तरफ जब मनुष्य की गतिविधियां आगे बढ़ेंगी, लाइक आर्टिस्ट, spiritual practice, the selfishness and greed which dominating people mind today will be replaced. This is the solution by a new feeling of love and brotherhood. As we expand our minds towards the infinite and learn to share our mundane treasures, we will realize more and more that we are all indeed one humanity, that we are all the sons and daughters of one infinite intelligence who is guiding us all to perfection instead of being based on competition and mutual hostility. Society will be operated through mutual cooperation and love. ऐसा रहते हुए भी the only solution is that we, as you rightly said, let us agree to disagree on some points, but let us move together, as Dada told the Sangha Chadom, following the Sangha Chadom dictates. And that there only the future is. Otherwise, there is no future. Yes, Tanmay Dada, please. Thank you so much. Namaskar, Namaskar, Dadaji. uh, Dada. The very beginning, I want to make a submission that the topic is indeed quite interesting. However, I feel that the topic is very, very broad and abstract, Mhm. and so it is quite difficult to frame the points for speaking because uh, 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 it is difficult. Like I am really struggling to to figure out whether we are talking about individuals or groups or countries. And for example, if we are talking about countries or governments, there will always be uh, competition between them. Yes. And there are very many kinds of interests which are clashing. There are defense issues and there are commercial issues. Uh, Many kind of interest conflict of interest are there. Similarly, if we are talking about groups, then if we are talking about in groups in political field, there are many political entities, political parties. They will there is a there will always be competition among them to win elections. They will never cooperate fully with each other. Even when a party is doing good work, then also we find that other parties will oppose it. Similarly, in economic field, there are a lot of organizations, companies. They also have their competition among them. They will not cooperate with each other. Similarly, in science and technology, uh, organizations or academic organizations, sports, religious groups, caste groups, tribal groups. In Manipur, we are seeing a lot of violence among Kuki and Meitei groups. Yeah, religious. Yeah. So that is due to clash of interest because High Court said that Meitei group should also get reservation. They have also their own kind of culture, and there is not
they also require, they are also qualified to get tribal reservation. So the other groups, even then, even though their reservation was not removed or discontinued, even then they could not tolerate that Meitei group is Yeah. start getting reservation. So there are caste groups also. They have also different kinds of conflict of interest. Religions, we all know that some religions propagate that the people of other religions are the worst creatures, they should be killed. And they are getting government funding also for their religious institutions to teach these things. When anyone wants to stop their funding, they will oppose it. There is a clash of interest everywhere. Yes, When yes. when we are talking about individuals, then we find that people, as Baba has said, that human life is an ideological flow. Everyone is following some or the other ideology. Ideology. Then there are ideological differences. There will be a conflict. Some person is following a defective ideology. Someone is following a good ideology. Then there will be always a clash among good or bad. Has always been a clash between good and evil. Mm-hmm. So, however, cooperation is possible if our interests converge, of whether there are individuals or groups, if their economic, spiritual, academic, any kind of interest converge, then there will be cooperation. Another thing is that cooperation, we can do certain things to bring about greater cooperation among individuals and groups by bringing about a fair system, bringing about a good justice system, good educational system, Good by point. spiritual education. So by means of these things, we can uh, minimize the clashes, minimize the vested interest, and increase the cooperation. However, ultimate cooperation is never possible. It is my There will be always, as the very sloka is uttering that Vachitrayam Prakriti Dharma. So unless there will be differences. There is no doubt. That's why, see, you rightly said there should be balance. First of all, there has to be the balance. So need to be the balance, achieving balance between competition and cooperation. क्योंकि दोनों important चीज है, ऐसा नहीं कि extreme of competition at the cost of somebody is wrong. Competition is not wrong, but competition is mainly जहां हम देख रहे हैं. For example, there is no much competition in Scandinavian countries, as Dada told, because everybody's basic needs are guaranteed. They know that they will get job. So that is what Baba's very fundamental principle का जो पहला principle है, जो economic principle का पहला principle है, everyone must get some job for their livelihood. If this is guaranteed, I don't think there will be such competition that, जैसा कि आप बोले ना कि वो दूसरा इसलिए नाराज हो जाता है, आप कुकी और उनका एग्जाम्पल दिए, उसको रिजर्वेशन क्यों मिला, उसके लिए वो नहीं, इसलिए नहीं कि हमको नहीं मिला उसके लिए वो नाराज था. आई एग्री योर पॉइंट. So there has to be a balance, and the role of convergence is also very important, or the coming together for diverse entities. जैसा आपने बोला, उनको के लिए क्या एक कॉमन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा. बाबा एक एग्जांपल देते हैं जो मेरे को याद आ रहा है. यू ऑल एग्री दैट अभी जो कोई दीदी बोल रही थी, अनलेस देयर इज अ सेंटिमेंट, पीपल डोंट गेट यूनाइटेड. तो बाबा एक बोलते हैं कि एक ऐसा सेंटिमेंट है विच कैन यूनाइट नॉट ओनली इंडिया बट द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज एंटी एक्सप्लॉयटेशन मूवमेंट. Because exploitation is there, so people will get united. For example, आपके पॉइंट से ले रहे हैं, द कॉमन पॉइंट जो है, जैसे कि हमारा अभी एनवायरमेंटल टीटीज की हम लोग बात किए, आप दादा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ग्रोथ्स की जो लिस्ट है जब देखिएगा, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, पता नहीं उस समय आप थे कि नहीं, प्रभुत्व जितना कुछ बोल सकता है बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के लिए, वो चीजें बिल्कुल वहां रखी हुई हैं. और इनका टारगेट है, यूनाइटेड नेशन का टारगेट है, मतलब वर्ल्ड हैज
assured that yes, we all will achieve by 30. मतलब अब आप समझ सकते हैं कि 6 साल और बचा है. I mean, I'm not very hopeful, but yes, if we achieve such common goals and for entire energy is put in that, really world will be different. And unless the basic needs are guaranteed, the spirituality will always look as an utopian idea. बट इवन द पीपल जिनके पेट भर रहे हैं उनके लिए भी उटोपियन आइडिया इसलिए है, यू राइटली सेड, कि दे डू नॉट हैव आइडियोलॉजी एंड ह्यूमन लाइफ इज एन आइडियोलॉजिकल फ्लो. अनलेस यू हैव आइडियोलॉजी, if your ideology is to accumulate money, certainly that is not a what do you call subtler ideology. It is ideology. You rightly said everybody has an ideology. So we are looking for a broader ideology, a humane ideology, a rather neo-humanistic ideology, where we take everyone, we consider everyone, not only human beings, but even non-humans. That is human plus nature. So with this, I will request my Dada Harananji to please conclude this session with few words. Please, thank you. Thank you, Dada. 2 points I would like to mention in addition. The beautiful elaboration done by Tanmay ji is actually explained by Baba in the principle, in 2 principles, all of us know. The whole system has been working on the principle of selfish pleasure. Now we can talk about it on some other day. It has 4-5 dimensions as Baba has explained. आत्म सुख तत्व के अर्थ क्या है, इसके 4-5 डायमेंशन. और वो कहते हैं कि जब तक ये दुनिया आत्म सुख तत्व से सम समाज तत्व की ओर नहीं बढ़ेगी, प्रिंसिपल ऑफ सर्विस साइकोलॉजी, तब तक ये सारी समस्याएं जो तन्मय जी कह रहे थे और लोग कह रहे थे वो बनी रहेंगी. वो संगठन स्तर पर हो, क्या परिवार में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट है. सबके जेनेटिक फुटप्रिंट्स अलग अलग हैं और संस्कार अलग हैं, परवरिश एक है, सुविधाएं एक हैं, लेकिन हर कौन सा परिवार है जिसमें कुछ वैचारिक मतभेद न हो? दोस्तों, ये एक फंडामेंटल, बाबा ने बड़ा साइकोलॉजिकली चीजों को एक्सप्लेन किया है. तो वन इज दिस कि होल कैपिटलिज्म, जैसे कहते हैं, वन मेजर पिलर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइकिक सेल्फिश प्लेजर इज डॉगमा. कहता है कि इसी पर टिका हुआ है. तो ये, हाँ, तो बोले कि जब तक ये डॉगमा और सारी चीजों से आप, अब ये सवाल है कि हाउ टू मूव, व्हाट इज द ब्रिज. जिस ब्रिज की बात कह रहे थे इशारे से तन्मय जी, तो वो उसको शब्द वैसा नहीं दे पाए कि हम आत्म सुख तत्व से कैसे बढ़ेंगे सम समाज तत्व. आसान खेल नहीं है, ये बहुत कठिन यात्रा है. और अगर पैनामा कैनाल के बारे में आप जानते हैं कि पैनामा कैनाल जो है पैसिफिक को अटलांटिक से जोड़ता है, और अभी उसमें भी क्लाइमेट चेंज के चलते काफी गहरी समस्याएं आ गई हैं. और उसमें क्या करता है, कुछ दूरी तक इस लेवल पर ले जाके गाड़ियों को उठा देता है लंबे हाइट पर, और 26 किलोमीटर तक उसी हाइट पे गाड़ियों, मतलब सॉरी, जहाजों को उठा के फिर उसको नीचे उतारता है दूसरे गेट से, और तब फिर, तो ऑल्टीट्यूड का डिफरेंस है. तो ये ब्रिज जो है ना, बीच में मानसिकता को उस लेवल में लाके जो दोनों समुद्रों को जोड़ने की बात है. सेल्फिश प्लेजर तो रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा ही, अटलांटिक रहेगा, लेकिन पैसिफिक में अगर उतरना है या किसी, तो बीच में मानसिकता को उठा के 26 किलोमीटर पनामा कैनाल की तरह जहाजों को लेकर ले जाना पड़ेगा और फिर उतारना पड़ेगा. अब वो क्या है 26 किलोमीटर की यात्रा? वो यात्रा बाबा ने एक और बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है कि साइकिक पैबुला, दैट इज साइकिक ऑब्जेक्ट्स. हमारे सारे मटेरियल वर्ल्ड के हैं, हमें सुख चाहिए, ये सारी लड़ाइयां जिनका जिक्र तन्मय जी ने किया, वो बाबा की एक बात से स्पष्ट हो जाती है कि हम हमारा जो गोल है साइकिक, हम दिन भर चिंतन किसका कर रहे हैं? हमारा सारा जो आंतरिक चिंतन शिविर है उसमें क्या चल रहा है? जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, सुविधा चाहिए, ये चाहिए. वही आपने जो कहा कि डिमांड का चार्टर बना हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का चार्टर ड्रॉअर में अंदर घुसा हुआ है या बैंक के लॉकर में लॉक कर दिया गया. तो वो कहते हैं स्पष्ट रूप से कि as long as this psychic propensity, this psychic pabula is not changed to psycho-spiritual pabula, इस समस्या का समाधान नहीं. तो psycho-spiritual pabula जो अभी राजेंद्र दादा ने बहुत अच्छी बात कही, without using this word, कि जब तक मन की थोड़ी मानसाध्यात्मिक तरंग नहीं मन में आएगी, तो एक गोल, एक विजन नहीं हो सकता है. क्योंकि
जब 10 में 9 आदमी पैसे की बात कर रहा है और एक आदमी हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, तो वो अकेला पड़ गया है। तो इसीलिए जब तक वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और लोग भी नहीं ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे करेंगे लोग, इट्स अ वेरी, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया जो है, जो तन्मय जी ने उसको कहा कि कैसे हम टुकड़ों में बट गए हैं। हमारे अजय भल्ला जी की आवाज में आज थोड़ी पेसिमिज्म मुझे दिखी। वो बहुत है, वो रैशनल, स्पिरिचुअलिटी वाले पार्ट। इफ यू प्रोसीड रैशनली यू टेंड टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो एक फिलोसोफर जो कहते हैं कि द डेंस डायस्पोरा ऑफ डिप्रेशन, वो घेर लेता है कि अरे अब तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं, हम तो आए ऐसे ही मर जाएंगे। तो ये इससे तो बचना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बाबा ने कहा है कि फंडामेंटल जो 5 पिलर्स हैं जीने के, उसमें होप एंड ऑप्टिमिज्म है। वो उन्होंने खुद कहा था कि आई एम एन इनकॉरिजिबल ऑप्टिमिस्ट। तो ये तो है ही कि आंधी तूफान में पनामा कैनाल सूख रहा है, फिर भी जहाज को पैसिफिक से अटलांटिक, अटलांटिक से पैसिफिक ले ही जाना पड़ेगा। ये पुल लंबा है, यात्रा लंबी है, दम फूल रहा है हम सभी का, हम देख रहे हैं। और अजय भल्ला दादा तो एक्स आर्मी होके भी, पर थकिए मत, थकना नहीं है। अगर थक कर बैठ गए आप जैसे प्रहरी और सेनानी, जो वाकई सेनानी थे, तो बाकी का क्या होगा। इसीलिए लड़ना है, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल इज द एसेंस ऑफ लाइफ, एज ही यूज्ड टू से। तो इसलिए फाइनली आई वुड से व्हाट आई कुड रिकलेक्ट फ्रॉम हिज डिस्कोर्सेस, कि साइकिक पैबुला को साइको स्पिरिचुअल पैबुला की तरफ ले जाना पड़ेगा। इसीलिए पूरी दुनिया, जो बाबा ने कहा कि अल्टीमेटली ऐसे जियो मैग्नेटिक चेंजेस होंगे कि मन में ही ऐसे मूलभूत परिवर्तन प्रकृति कर देगी कि आदमी स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल चिंतन की ओर बढ़ने लगेगा। दिस ईयर सेट कि इतने जियो मैग्नेटिक चेंजेस हो जाएंगे और माइंड पर ऐसा इंपैक्ट आएगा कि आदमी ईश्वर उन्मुखी हो जाए। तो अल्टीमेटली देखिए ऐसा है कि तारक ब्रह्म आए हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं अजय भल्ला जी को और तन्मय जी को, वो दिन जरूर आएगा। ये गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार। थैंक यू। आई टेक 1 मिनट, प्लीज। मैं 1 मिनट लूंगा दादा। प्रणाम दादा जी। एक्चुअल में क्या है कि पहले तो अच्छा तन्मय, आप रणदीप दादा है ना, आई थिंक। हाँ रणदीप दादा जी। ओके, तो एक्चुअल में जो उन्होंने भी सही कहा और मेरे माइंड में भी था कि जो टॉपिक है ना, उसमें मुझे थोड़ी सी जो है क्लैरिटी पूरी तरह से नहीं थी कि वेदर इट इज एट इंडिविजुअल लेवल, एट सम इंस्टीट्यूशनल लेवल, सोशल लेवल, कंट्री लेवल और व्हाटएवर। तो उसमें जो है जस्ट जैसा कि तन्मय जी ने और रणदीप दादा ने भी कहा, तो मैं उसी में ले रहा था, क्योंकि मैं कई जगह से आके आ रहा हूँ, तो बहुत कोशिश करने के बाद भी जो है म्यूचुअली कोऑर्डिनेशन जो है ना, जो वो प्रॉपरली हो नहीं पाई। लेकिन सर्टेनली जो कन्वर्जेंस, और जैसा हरानंद दादा जी ने लास्ट में कहा कि जो हमारे मूलाधार चक्र की जो 4 वृत्तियां हैं ना, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, तो काम और अर्थ में जब तक फंसे रहेंगे, यानी अर्थ में जब तक साइकिक साइकोफिजिकल में फंसे रहेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन जैसे ही वो साइको स्पिरिचुअल होगी, जो धर्म का पता लगेगा कि हम अल्टीमेट क्या है, देन सर्टेनली दैट कन्वर्जेंस विल बी देयर। आई सर्टेनली एक्सेप्ट दैट, but it was not a pessimistic thing that I told. But the thing is, the topic was not, to be very frank, I really accepted कि topic मुझे पूरी तरह clear नहीं था, but certainly मेरा एक विनम्र निवेदन है, विषय चूंकि मेरा सुझाव था, तो आई एम ए बिट अपोलोजेटिक आफ्टर दिस इंटेलेक्चुअल अटैक। मैं एक विनम्र बात कह लूं कि हमारे दिमाग में राजेंद्र दादा ने इसको अप्रूव किया, आई एम ग्रेटफुल टू हिम, कि ये बात थी कि सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक और सामाजिक जो हमारा वांग्मय है, वो हजारों साल पुराना है, जैसे 1000 साल पुराना बरगद का पेड़। तो वो एक पूरा बगीचा बन जाता है बरगद का पेड़। ये बात सही है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मूल जड़ किधर है, पर हम चूंकि सब विचारक हैं, चिंतक हैं, तो मैं इस बात के प्रति आश्वस्त था कि हम लोग उस बरगद की जड़ को ढूंढ निकालेंगे और जड़ को ही काट डालेंगे। बाबा की आरी है, बाबा का हथियार है, हम लोगों को प्रयोग करना, तेरे निराश नहीं होना है, लड़ते रहना।
No, no, certainly, Dada. Certainly, and I 100% agree to your point कि the day अभी हम आसपास जो देख रहे हैं ना, सभी लोग काम और अर्थ में उलझे हुए हैं. जैसे ही जो है that psychic, psychophysical will convert into what do you call it, psycho-spiritual. The things will converge, mutual interest will converge, and certainly mutual coordination, cooperation, everything will be there. Neo-humanistic approach will be there. Sangha Chadvam concept will be there, and Yes, sir. everyone will move towards that our destiny finally where we have to reach. And that only in nutshell what the other told, that some Samaja Tattva will be there. See you all tomorrow and next Saturday. Thank you.